आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ PYQ सॉल्यूशन फॉर 2016 एंड ऑल ऑफ यू नो, आप सब जानते हैं, यू आर ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड यू आर ऑन अनअकैडमी। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अनअकैडमी गाइस। So why Unacademy? Everyone knows why Unacademy, isn't it? We are the choice of the toppers, and we have got so many advantages that no one else have. You can check the advantages, the educators, the flexibility, the number of views, the notes, everything. So everything at one place is something which actually is amazing, right, guys? So, confused about your UPSC CSC subscription? Try it for free. This is amazing. So you can scan this QR code. 7 days of free subscription, guys. Amazing. I think you should actually give it a go. I sincerely believe every UPSC aspirant for 2024 should try this for 7 days and feel the difference. So these are the following 4 simple steps to get the 7 days free trial for UPSC CSC subscription. Scan the code, register, activate your code and start learning today, right? Nothing better than this, guys. Nothing better. All right, guys. Unacademy subscription for Plus and Iconic can get 10% flat. So here are the details. You can use this code YTUPSC. These are the details. You can go for no cost EMIs also. So there is a great advantage learning with Unacademy. So Aram, right? The right time to start preparation for 2024 is now. So Aram बैच start हो रहा है 28 फरवरी को, 16 फरवरी को शुरू हो चुका है, हिंदी मीडियम है, bilingual है. So guys, please enroll yourself in these batches. Prelims with Pathfinder. This is a crash course for UPSC CSC 2023 pre. So this has also begun. The classes have started. So please, you can also enroll for the same course. And we are availing EMI options at 0% interest, guys. Everyone knows this. So please call on this number and get all the details. And we are in Rajendra Nagar. That is the happiest news. India's best offline teachers under one roof at Unacademy. So I welcome you all to come and feel the difference, enroll yourself, start preparing, guys. My name is Rishi Bhargava. I've been teaching training students for CSAT since the inception of CSAT, and I have started this series on PYQs. So we have started from year 2021, and today I'm going to discuss 2026, right? See, you can see my credentials, and you can follow me on my Telegram channel, Rishi Sir UPSC. The best part to follow this Telegram channel is that there are a lot of infinite material and solution for CSAT available over here. So you can always follow me at UPSC, Rishi Sir UPSC. Also on Unacademy platform, you can follow me on Bhargava. Again, you would get a lot of material over here also, right? So CSAT 2016. A lot of students ask me when CSAT changed. 2016 was the year when CSAT actually changed. Before that, it was actually an easy paper, but 2016 we realized that yes, they have started certainly asking real good questions, not from aptitude, but then I've realized that they had put really good questions in reasoning. So today we will solve this paper and see how easy it was, how tough it was. That analysis can be done only after solving it. So I welcome you all, guys. Let's move. So first question is from geometry. So a lot of time teachers ask, students ask that geometry chhod de. Every year there is 1 or 2 questions. So why to leave it? So this is a great question. He says an agriculture field is in the form of a rectangle having length x1 meters and breadth x2 meters. X1 and x2 are variables if x1 plus x2. So he is saying the sum of the length and the breadth is 40 meters. Then the area of agricultural field will not exceed which of the following values. So basically he is asking about maximum
value of area of this rectangle whose is in the form of a rectangle whose length and breadth are x1 and x2, and only thing known is x1 plus x2 is equal to 40. Cannot exceed. Now definitely if you are an engineering background student, he is asking you about the maximum value of an area with a given constraint that sum of the sides is 40. For a non-engineering student, I must say, please keep this very simple logic in mind. Maximum or minimum values exist only when all variables are equal. Meaning if he is given x1 plus x2 is equal to 40, then maximum would be when x1 is equal to x2. So if I put x1 is equal to x2, both the answers would come out to be 20. If I put x1 and x2 equal, so definitely x1 is equal to 20, x2 is equal to 20. In that case, maximum value of area would actually be 20 into 20, which is 400. So he says which of the following values cannot exceed which of the following values? It cannot exceed 400 square meter. Can you make a note of this? See, they are giving you good questions, right? They are actually giving you amazing questions, right? So एक बार note कर लीजिए please. चलिए great. So next question देखते हैं. He says sum of ages of 5 members comprising of a family 3 years ago was 80 years. Right? 3 साल पहले 5 लोगों की उम्र 80 थी. All right. 3 years ago. So I am writing 3 years ago. A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 is equal to 80. Is equal to 80. तो अगर अपन आज की बात करेंगे, if I talk about today, if I talk about only these 5 members, A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5, every member's age would increase by 3 years. 5 members, 3 years, 15, right? So it would be 80 plus 15, which is this is, and this was 3 years ago, and this is today. A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 is 95, which is second, right? But then he says the average age of the family today is same as it was 3 years ago because of the addition of the baby during the intervening period. But what is happening? Actual today condition is what? Actual today condition is that A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5, and there is a baby born. He says the average age of the family is same, which means the average age of the family of 6 people is 80. Same. That is what actually, not 80, sorry guys, not 80. Actually, average was 16, right? So average was 16. Wait a minute. Just writing it. So I am writing over here. Average age क्या था इधर? Average age was 16. So again this is same, which means average age is again 16, which means A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus baby is equal to 96. Because the baby was born, their average age remains same, right? Which means it was 16, which means now it is 6 people. So total age of 6 people is 96. This is your equation number 3. So what is the age of baby? Definitely if you minus these two, age of becomes 1 year, right? How old is the baby? 1 year old.
I hope this is clear to all of you. Clear? Yes, sir. चलिए. So he says the emolument क्या होता है? Salary of two persons are same, but one gets an allowance to the extent of 65% of his basic pay, and the other gets an allowance to the extent of 80% of his basic pay. So the ratio of the basic pay of the former based to the basic pay of the latter is how much? So guys, their salary is same, not their basic pay. So the first guy, suppose this guy is getting, first guy, his basic pay was A, right? So his total salary is actually A plus 65% of A, which actually is 1.65 A. Total salary is 1.65 A. If you add it, you will get the same thing, right? Similarly, second guy is B. Then total salary of the second guy would actually be B plus 80% of B, right, which is 1.8 B. 1.8 B. But then he says, he is very, very particular about it, the ratio of the basic, he says the total emolument of two persons are same, which means their salaries are same. So 1.65 A is equal to 1.8 times B. Alright, so now the ratio of the basic pay, so he's asking what is A upon B, which is 1.8 is to 1.65. So A upon B is actually 180 is to 165. So just cancel it, guys. It comes out to be 12 is to 11. Your answer is D. All right. So this is a great question on ratios. I hope this is clear to all of you guys. हाँ, बढ़िया. चलिए, great. Next देखा जाए. A person is standing the first step from the bottom of the ladder. If he climbs 4 more steps to reach exactly the middle step. So he is standing first step पे खड़ा है. So first step of the ladder पे खड़ा है. If he has to climb to reach exactly middle step. So 4 more steps. 1, 2, 3, 4. So this is your middle step. If this is your middle, 4 steps down, definitely 4 steps up. So total number of steps are 9. भगवान करे ऐसा क्वेश्चन हर बार आए. Isn't it, guys? This is so easy. Everyone, any one of you could have done it actually, isn't it? So next देखा जाए. A vertical, AB is a vertical trunk of a huge tree with A being the point where the base of the trunk touches the ground. Okay. ये लीजिए, A भी एक trunk है, A, B. All right. He says, due to a cyclone, the truck has been broken at C, which is at a height of 12. So ये रहा C. ये रहा C. Broken part is partly attached to the vertical portion of the trunk at C. If the end of the broken part B, the ground, if the end of the broken part B touches the ground at D, which of the which is at a distance. So guys, come on, ये टूट गया, ये है आपका D. This is your D, which is at a distance of 5 meters. If you are students, if you are my students, this is a vertical trunk, 90 degree, 5, 12. If you have done geometry with me, you know this is a Pythagorean triplet, 5, 12, 13. Or you can apply Pythagoras theorem over here. This would come out to be 13. All right. Find the original height of the trunk. Obviously, this B broke down and joined at D, isn't it? Either. So definitely your this
this is equal to this, which means this is also 13. So what is length AB? 12 plus 13, which is 25. Again, Pythagorean triplet and Pythagoras theorem comes into play. So guys, they are into geometry. They love Pythagoras theorem. Maybe past 2-3 years, they have not given you too many questions, but questions on geometry are being asked. Okay, चलिए next देखते हैं. लीजिए, Ram and Shyam work on the job together for 4 days and completed 60% of it, right? Ram plus Shyam completed 60% work in 4 days. 60% means 2/5 of the work in 4 days. So definitely total work would be done in 4 into 5 by 3, 20 by 3 days. So this is Ram and Shyam. They can finish the job in 20 by 3 days. All right. Then he says Ram takes leave then, and Shyam works for 8 more days to complete the job. So Shyam does 40% work. 40% is 2/5 work in 8 days, which means total work Shyam can do it in 8 into 5 by 2, 20 days. 20 days. So Ram and Shyam, they can together do the piece of work in 20 by 3 days, and Shyam alone can do the same piece of work in 20 days, right? So what do? You want to find number of days Ram would finish the same job. So Ram plus Shyam 3 by 20 and Shyam 1 by 20, right? LCM 20. In that case, definitely Ram and Shyam, they make 3 units per day and Shyam makes 1 unit per day. So if we minus this, Ram makes 2 units per day. Ram makes 2 units per day. And what is 20? 20 is work. 20 is total work. So Ram makes 2 units per day. So Ram would take 20 by 2, 10 days to finish the job. Again, I have done this with LCM method. So first maximum result. I hope to all of you. Please check it. है ना? देख लो एक बार. Please make a note of this. ग्रेट गाइस, आगे बढ़ा जाए. देखिए, ये इस साल से इसने ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देने शुरू किए थे. क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा. देखते हैं. कहता है R and S are different integers, both divisible by 5, then which of the following is not necessarily true? Not necessarily true. Not necessarily true बोला है. Not ऐसा नहीं बोला कि necessarily true है. Not necessarily true बोला है. ठीक है. So R और S different integers हैं, both 5 से divisible हैं. So he says अगर R और S 5 से divisible हैं तो R minus S भी 5 से divisible होगा. Definitely होगा. देखिए, खुद देख लीजिए. R is 5 times K1, S is 5 times K2. So R minus S क्या हो जाएगा? 5 K1 K2 times 5 है ना? R minus S, isn't it? So definitely it's divisible by 5. Yes, it is necessarily true, right? So R plus S is divisible by 10. This may not be true because 5 is divisible by 5, 10 is divisible by 5, but 15 is not divisible by 5. This is not true, right? This is the only thing which is not true, and he is asking you, and there is no multiple options at that time, so not necessarily true. I think this is okay. R into S is divisible by 25, it would be true. R square plus S square is divisible by 5, it would also be true. So only thing which is not necessarily true is option number B. I hope this is clear to all of you.
He says how many numbers are there between 100 to 300 which either begin with or end with 2. देखिए end with 2 की बात करेंगे. It is 102, 112, 122, isn't it? 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192, isn't it? So I just keep on writing. And there is one more where it is 302, isn't it? 312, 322, 332, 342, 352, 362, 372, 382 and 392. Done, isn't it? Ending with 2. Now beginning with 2 guys, but it is more than 300, so we don't need it actually, isn't it? More than, these are more than 300, so it is like lying between this now, so we don't need it. More numbers, actually beginning was 200, 201, 202, 203 to 299. 299. Now this is important, how many numbers these are. If you know that you are number, the number of numbers are 299 minus 200 plus 1, which means 100 such numbers are there which are starting with 2, right? So 100 numbers starting with 2, right? 100 numbers starting with 2, and then you may count it as 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282 and 292. How many are these numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 here, 10 here. But these 10 are also counted over here. ये जो 10 है 202, 212, 222, ये तो इधर भी काउंट हो गए. तो एक बार -10 आपको लिखना पड़ेगा. Answer is 110 numbers, right? 110 such numbers. Really, really good question. I must say really, really good question, right? So इसको नोट कर लीजिए एक बार. Any note it? चलिए आगे बढ़ते हैं. 4-digit numbers using the digits 1, 2, 3, 4, and none of these 4 digits are repeated in any manner. All right, none of these 4 digits are repeated in any manner. Further, he says 2 and 3 are not to immediately follow each other. 2 and 3 immediately एक दूसरे को follow नहीं करेंगे. और conditions दिए हैं. 1 is not to be immediately followed by 3. 4 is not appear at the last, and 1 is not to appear at the first place, right? So 1 is not to appear at the first place. So there would be 6 such numbers from, or kindly write it. Chalo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 1. See, wait a minute. It's very easy to write if you have done permutations and combinations with me. I think it's like 1, 4, 2, 3 and 1, 4, 3, 2. But we don't require any number starting with 1. He has actually specifically specified it specially. So number starting with 2, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 3, starting with 2. Right, starting with 3, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 4, right, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, and 3, 4, 2, 1. See, and starting with 4, 4, 1, 3,
4132, 4213, 4231, 432 and 4321. So you write all 24 numbers and then see 1 is not to be appearing at the first place. Cancel all those numbers. जहाँ पे 1 appearing at the first place है, ये 6 नंबर तो कैंसिल ही हो गया. 4 is not to appear at the last place. 4 is not to appear at the last place. 1, 2, 1, 2, right? And then 4 is not to be appearing at the last place. तो लीजिए ये भी कैंसिल हो गया है ना. And then he says 1 is not to be immediately followed by 3. 1 is not to be immediately followed by 3. 1 is not to be immediately followed by 3. Right, guys? 1 is not to be immediately followed by 3. 1 is not to be immediately followed by 3. Isn't it? So, ये भी चला गया. 1 is not to be immediately followed by 3. And 2 and 3 are not to be immediate, not to immediately follow each other. 2 and 3 not to immediately follow each other. 2 and 3 not to immediately follow each other, right? 2 and 3 don't not to follow each other. 2 and 3 not to follow each other. कितना नंबर रह गया चेक कर लो, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many different numbers can be formed? 6 different numbers can be formed, right? So that's the best way of, finding the answer. Best way of finding the answer. I know if you are my student and you know how to form these 24 numbers, I have asked you to add these 24 numbers also. I have given you trick for that in permutations and combinations. So this is ignoring the conditions and getting your answer. I hope this is clear to all of you guys. A cylindrical overhead tank of radius 2 meter and height 7 meter is to be filled from underground tank of size 5.5 meter into 4 meter into 6 meters, right? Then he says how much portion of underground tank is still filled with water after filling the overhead tank completely. See, there is a cylindrical overhead tank, so the volume of cylinder is pi r square h, which is pi 2 square h is 7, right? Which comes out to be 28 pi. 28 pi. So I'm not, bothered about pi. And then, volume of underground tank, or if you see underground tank of size, this is given as a, it is a cuboid. So just put the value of pi, 28, 22 by 7, 88. 88 cubic meter, and volume of underground tank would be 5.5 into 4 into 6, which comes out to be 132 cubic meter. So when the overhead tank is, so volume of underground tank left would be 132 minus 88, 132 minus 88, which comes out to be 44. So this much of water is left in underground tank, which is 44 cubic meter. Then he says how much portion of underground tank is still filled. So portion would be 44 by total volume is 132. Isn't it? Cancel it, it is 1/3. So 1/3 of the volume is still there. Can you mark it? Right? ठीक है, आसान है. कितना ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है? So please remember my golden words. Don't leave anything. Do not leave anything at all, right?
Will the A and B walk around a circular park? They start at 8 a.m. from the same point in the opposite directions. Guys, opposite direction में है, right? A and B walk at a speed of 2 rounds per hour and 3 rounds per hour respectively, right? How many times shall they cross each other after 8 a.m. and before 8:30 a.m.? The topic is called running around a circle. If you attend my classes on time and distance, I can assure you कि ये वाला टॉपिक जो है हम लोग बहुत बार कवर कर चुके हैं और करते रहते हैं, right? So if you are my students, you know that speed of A दिया हुआ है 2 rounds per hour and speed of B दिया हुआ है 3 rounds per hour, right? And ratio of the speeds is equal to ratio of the distances traveled. So you can easily say that if you check out so their relative speed, since they are in opposite direction, relative speed is 2 plus 3, 5 rounds per hour, 2.3, which is 5 rounds per hour, which actually means they meet 5 times in 1 hour. 5 rounds per hour, which means they would definitely meet at 5 points in 1 hour, right? Which means from 8 to 9 a.m. they would meet 5 times, and from 9 to 9:30, because he is very specific, before 9:30, right? Before 9:30 they would actually meet 2 times. So from 8 to 9:30 they meet 7 times in total, right? So can you mark first as your answer, please? This is again very important. This is one question which actually has geometry involved in it again. करेक्ट, अगला देखते हैं. W can do 25% of work in 30 days. So W 25 is 1/4 of work in 30 days. So total work would be in 120 days for W, right? X can do 1/4 in 10 days for X, 1/4 in 10 days. So 25% is also 1/4. 1/4 directly लिखा है, so total would be in 40 days, right? Similarly, Y can do 40% work. Y can do 40% is 2/5 in 40 days. So total would be 40 into 5 by 2, 100 days. So Y would take 100 days to do the same work. And then he says Z does 1/3 in 13 days. So Z does total in 13 into 3, 39 days. 39 days. Who will complete the work first? Definitely Z would complete the work first. Not at all a problem. This is a very plain simple question, है ना? ये तो हो जाएगा. Next देखते हैं. देखिए एवरेज, फिर से द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 is rupees. He says average monthly income of a person in a certain family of 5 is rupees 10,000, right? What would be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person increases by 12,000 per year, right? So guys, average of 5 people is 10,000. So increase in salary per month now is 12,000. Sorry, 1,20,000 upon 12, which is 10,000 per month.
10,000 per month. So increase per month would be 10,000. That was the average increase upon number of increase, which is 2,000. So now every person's salary increases by 2,000. So the new average income, what would be the average person in the same family, would be 12,000. देखो यार, पूरा का पूरा सैलरी इंक्रीज जो है, इफ यू वांट टू राइट इट ऑल्सो, आप लिख भी सकते हो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 was how much, 50,000 was 50,000, isn't it? Because 10,000 टोटल इनकम जो थी वो 50,000 हो गई. अब अगर आप सैलरी इंक्रीज, ये मंथली दिया हुआ है, तो सैलरी इंक्रीज कितना होता है? 1,20,000 का, विच मीन्स 10,000 का इंक्रीज हो गया. सो नाउ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 किसी का सैलरी इंक्रीज हो गया. सो 10,000 रुपये से इंक्रीज हो गया तो 60,000 बन गया. तो इसका एवरेज कितना बन गया? अपॉन 6,000, 60,000 अपॉन 5 कम्स आउट टू बी 12,000. सो दोनों ही अच्छे तरीके हैं करने के. दिस इज योर चॉइस, आप किस तरह करना चाहते हैं. सो यू कैन सी एवरेज के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना गाइस. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. In a race, a competitor has to collect 6 apples which are kept in a straight line on a track, and a bucket is placed at the beginning of the track starting point. चलिए, ये रही bucket. ये है starting point. The condition is that a competitor can pick only one apple at a time, run back with it, and drop it in the bucket. It has to drop. If he has to drop all the apples in the bucket, how much total distance he has to run? If the bucket is 5 meters from the first apple and all the other apples are placed 3 meters apart. लीजिए, पहला एप्पल जो है, ये बकेट है. पहला एप्पल जो है 5 meters, this is first apple. राइट, कितने एप्पल्स हैं? 6 एप्पल्स हैं. तो बाकी जो है A2, A3, A4, A5 और A6. सो ये है 5 मीटर, राइट. ये है 3, 3, 3, 3 और 3. सो किस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा? तो देखिए, दिस पर्सन रन्स फ्रॉम हियर. सो पहले गया A1, 5 मीटर गया और वापस गया बकेट में. इसने देखिए यहाँ से 5 गया और इस तरह वापस आके 5 जमा 5 आपके सामने है, राइट. सो अब देखिए, ये पहला एप्पल था, राइट, फर्स्ट एप्पल. अब सेकंड एप्पल के लिए क्या होगा? जनरली लोग कर देते 3 जमा 3. नहीं, 3 जमा 3 नहीं होगा. देखिए 5 यहाँ से जमा 3, 5 जमा 3 प्लस 5 जमा 3. Isn't it? Isn't it guys? थर्ड एप्पल के लिए सी 5, 3 और 3. सो 5 जमा 3 जमा 3, 11 आगे 11 पीछे. तो ये 8 आगे 8 पीछे. फोर्थ एप्पल के लिए गाइस, फोर्थ एप्पल के लिए 11 जमा 3 कितना हो जाता है? 14 जमा 14. और फिफ्थ के लिए 17 जमा 17. और सिक्स्थ के लिए 20 जमा 20, राइट, विच एक्चुअली कम्स आउट टू बी, देखिए 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 34 प्लस 40. ऑलराइट. और अगर आप इसको ऐड करेंगे, देखिए 10 प्लस 40 इज 50, 16 प्लस 34 इज 50, 22 प्लस 28 इज 50, 150 इज योर आंसर. बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं. उसका कारण ये है कि आपको लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं. सो प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इजी आते हैं, थोड़ा नहीं पड़ता. तो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल कि हम लेके आते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. अराउंड आर्चरी टारगेट ऑफ डायमीटर 1 मीटर. सो आर्चरी कंपटीशन हो रहा है. 1 मीटर डायमीटर, 1 मीटर इज मार्क्ड विद 4 स्कोरिंग रीजन्स.
from the center outward as red, blue, yellow and white. 4 रीजन बनाए गए हैं. सेंटर से रेड, दूसरा क्या है ब्लू, येलो और ये है वाइट. ठीक है जी. और इफ द रेडियस ऑफ द रेड बैंड इज, रेडियस जो है इसका क्या है, इसका रेडियस है 0.2 मीटर और टोटल रेडियस जो है, ये रेडियस कितना है यहाँ से सेंटर ओ से, तो आप देखेंगे 1 मीटर है तो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, राइट. So question क्या है, what is the probability that the arrow falls in the red region of the archery target? Very important question. What is the area of red region? Area of red region is times what is the radius? Radius is 0.2 का whole square, right? Which is 4 pi upon 100, right? So area of the red region and total area. Area of red region, total area in pi times capital square, which is pi times 0.5 r 0.5 का whole square. See the diameter was 1 meter, which means radius is 0.5 meter, right? Which comes out to be 25 pi by 100. All right. So the probability of red region would actually be area of red region upon area of the target, isn't it? So red region is 4 pi upon 100 and 25 pi upon 100. So your answer is pi by 25.40, right? This is your answer. Here, see, 4/25 यार, परसेंटेज में हम लोगों ने गलती कर दिया है. 4/25 is how much? 4/25 is 16/100, which is 0.16. So probability is 0.16. अब आप बताएं मुझे क्या क्वेश्चन है ये, ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी. सो आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी. तो बहुत सारे बच्चे आजकल हमसे पूछते हैं कि ज्योमेट्री छोड़ दें. आप ज्योमेट्री छोड़ दीजिए, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ज्योमेट्री में आ जाएंगे और बटाधार हो जाएगा क्वेश्चंस का. सो प्लीज़ कुछ भी नहीं छोड़ना है, आप सब कुछ करके जाइए. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. बोलता है पर्सन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर द कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल गेन्स 10%, राइट. सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड एट 770. मार्क प्राइस 770 है, इस पे कैश डिस्काउंट 10% का दे दिया है उसने. 10% 77 रुपीज 77 का डिस्काउंट. सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 770 माइनस 77 693. सो सेलिंग प्राइस 693 और फिर भी उसने प्रॉफिट कमाया है 10% का. तो कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है. इफ यू आर माई स्टूडेंट, आपको पता है cost price plus 10% of cost price is selling price. So definitely cost price would actually be 693 upon 1.1, right? Which actually comes out to be 630. या फिर आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, cost price selling price upon cost price is 110 upon 100. इससे भी आप वैल्यू पुट ऑन करके आपको cost price का आंसर मिल जाएगा. चॉइस एब्सोल्युटली आप लोगों का है. आशा करता हूँ कि अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली सीसेट में यूपीएससी में क्या पूछने की कोशिश हो रही है. कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं. 2016 में देख लीजिए आप खुद ही. तो आप खुद देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको अपन लोग
बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं. He says consider the following statements. The rate of population growth is increasing in the country. The death rate is declining faster in the country compared to the birth rate. The birth rate is declining faster in the country compared to the death rate, right? So the rural urban migration is taking place regularly in the country. So which of the following conclusions may be true in the light of the given facts, right? The birth rate is declining faster in the country compared to the death rate, and the death rate is declining faster to the in the country compared to the birth rate, right? So चलिए, the rate of population growth increasing due to rural urban migration. देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रूरल अर्बन पॉपुलेशन माइग्रेशन से थोड़ी ना होती है, बिकॉज पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट वेदर देयर इज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन और अर्बन टू रूरल. सो आई डोंट थिंक दिस इज which of the following can be considered wrong. He says the rate of population growth is increasing due to the decline in the death rate only. देखिए, डिक्लाइन इन द डेथ रेट तो हो गया, इसका ये मतलब तो नहीं है कि रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. इट वुड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द बर्थ रेट. सो नो, दिस इज नॉट ट्रू. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द बर्थ रेट. अगेन बोलूँगा, सिर्फ बर्थ रेट पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि इट इज ऑल्सो डिपेंडेड अपॉन द डेथ रेट. बचा फोर्थ ऑप्शन, द rate of population growth is increasing due to the faster decline in the death rate than the birth rate. Obviously बाकी ठीक ही है कि बचा है, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है. इसको देख के मुझे ना याद आ जाता है, हमने एक टॉपिक किया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो अगर आपने वो किया हो तो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक. देखिए क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है. देयर आर सम नेक्टर फिल्ड फ्लावर्स ऑन अ ट्री एंड सम बीज आर हॉवरिंग ऑन इट. If one bee lands on each flower, one bee will be left out, and if two bees land on each flower, one flower would be left out. The number of flowers and number of bees. Is asking about number of flowers and bees. All right. So option से देखते हैं, ये देखना 4 and 3. So if number of flowers are 4 and number of bees are 3, देखना, if one bee lands one, right. So if one bee lands on each flower, one flower, see देखो, one bee lands on each flower. So चार, तीन बी, तीनों के तीनों तीन फ्लावर पे रह गई. तो उसके बाद कहते हैं one bee would be left out. No, गलत. तो अगर अपन लोग लेते हैं flower and bees to be 3 and 4. Now if one bee lands on each flower, definitely तीन bees तीन फ्लावर पे बैठ गई, एक bee रह जाएंगी, right? एंड इफ टू बीज लैंड ऑन द ईच फ्लावर, सो अगर दो बी एक फ्लावर पे बैठ गई तो एक फ्लावर रह जाएगा. डेफिनेटली आंसर इज सी. डेफिनेटली आंसर इज सी. तो आप इसको एक्चुअली में ऑप्शन ही कर सकते थे, इन द क्वेश्चन यूजिंग ऑप्शंस, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देखिए, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट from a customer. The firm produces 1,000 quantity of that product per day, out of which 5% is unfit. So daily production is 10,000 and unfit कितना है, 5% of 10,000. So definitely 50 unfit है. So fit product कितना रोज का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, 950. So 950 products are being produced. And what is the order? 19,000 is the order. So number of days would actually be 19,000 upon 950, isn't it? Which actually would be 20 days now. How many days an order would be completed? In 20 days the order would actually be completed. लीजिए, a class start at 11 a.m. and last till 2:27, right? So 11 a.m. to 2:27 p.m. 2:27 p.m. 4 periods of equal duration are held during this interval. After every period, a rest of 5 minutes is given to the students. देखिए, if there are 4 periods, so total rest time
total rest time between 4 periods is actually 5 into 3, isn't it 15 minutes? 5 into 3, 15 minutes of rest time. और अगर आप तुम खुद देखोगे, देखिए guys, how many hours are involved? You see total hours involved. So total hours involved would be 3 hours 27 minutes. See, 2:27 minus 11 a.m. isn't it 3 hours 27 minutes? Right, and rest time is 15 minutes, which means class time, see, to class time कितना हो जाएगा? Your class time would actually be 3 hours 27 minus 15 minutes. 3 hours 27 minutes minus 15 minutes, which comes out to be 3 hours, and 27 minus 15, right, comes out to be what? 12 minutes. So 3 hours is 3 into 60 plus 12 minutes, which is 192 minutes of classrooms, and these are 4 classes, so 192 upon 4 per classroom. So 192 upon 4 comes out to be 48 minutes. So total duration of each class is 48 minutes, and with the break of 5 minutes you would follow the suit. Clear है? Not tough, right? मैं तो मानता नहीं हूँ टफ है, पर ये जरूर है कि यू नो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन आंसर. चलिए नेक्स्ट देखा जाए. थर्टी ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्सड इन 180 ml ऑफ वेसल ए. सो वेसल ए है 30/180, है ना, एंड 40 ग्राम वॉज मिक्सड इन वेसल बी, और बी है 40/280, right, and 20 gram was mixed in 100 gram in C, 20/100. So solution in vessel B is, so sweetness में percentage निकाल लीजिए. this is 1/6 16.66% है, and this is 1/7 14.28% है, and this is 1/5 which is 20% है. So solution B is actually is less sweeter. C sweeter than C, नहीं. Solution B is 48%, है ना. Sweeter than A, नहीं. As sweet as C, नहीं. So less sweet than C, right? It is less sweet than that in C. Obviously यार percentage sugar देख लिया तो definitely B जो है वो least sugary है. So it has to be less sweet than C, not more sweet than C. So again this is a question which we have done it in classrooms. अगर तुम मेरे साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला टॉपिक करोगे तो यहाँ वहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन पड़ा हुआ है, राइट. क्वेश्चन देखिए, इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास कंट्रीब्यूट्स as many rupees as number of students in that class. So suppose number of students x हैं, so contribution पर स्टूडेंट भी आपका ₹x होगा. सो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा x² x to x, right. And then he says with the additional contribution of ₹2 by one student, the total collection is 443. So x² plus 2 is equal to 443, which means x² is equal to 441, which means x is equal to 21. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट आस्क मी कि सर हम स्क्वायर क्यों याद करें. खुद देख लीजिए 441 आपके सामने पेपर में एग्जाम में आया हुआ है, विच मीन्स x इज इक्वल टू 21. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? देयर आर 21 स्टूडेंट्स इन द क्लास. वेरी वेरी इजी इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इक्वेशन मेकिंग. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. कहीं टेस्ट स्कोर दिए हुए हैं. अनीता's mathematics test had 70 problems carrying equal marks. 10 arithmetic हैं, so 10 are from arithmetic.
and 30 are from algebra and 30 from geometry, arithmetic, algebra, geometry, right? ये total है. Okay. अब क्या कह रहा है? Although she answered 70%. So अनीता का स्कोर क्या है? 70% means 7 questions from arithmetic, 40 algebra means 12 from algebra, and 60 geometry means 18 from geometry, right? So he says she did not pass the test because she got less than 60% marks. So guys, total है 70, right? So pass marks हैं 60% of 70 which is 42, और इस अनीता के आए हैं 37. She has scored 37. So number of more questions she would have to answer correctly to earn 60% passing marks. So 42 minus 37, which is 5 more questions have to be answered to get the passing score, right? To get the passing marks. Okay? Kindly note it. एक बार नोट कर लीजिए. चलिए आगे देखते हैं. In a class there are 18 very tall boys. If these constitute 3/4 of the boys, so 3/4 of total boys is 18, which means total boys is 18 into 4 by 3, which is 24 boys. Okay, and then he says and total number of boys is 2/3 of the total students in the class. So 2/3 of total students is 24, which is 36 students, out of which 20 are boys. So this, what is the number of girls in the class? So definitely 36 minus 24, there are 12 girls in the class. आसान, बहुत इजी है ना, हो जाएगा, बहुत अच्छा. चलिए देखते हैं आगे. एवरेज, फिर से एवरेज. The monthly average salary paid to all the employees of the company was rupees 5,000. Monthly average salary paid to the male. This is a question on allegation. Males को मिला है rupees 5,200 and females को मिला है rupees 4,200, and right, and the average salary is 5,000. So males are 5,000 minus 4,200 is 800. And see, you have to minus this, right? And 52 minus 5,000 is 200. So basically males is to females are in ratio, which is males is to females. All right, so what is the percentage of males? So percentage of males would actually be 4 upon 1 plus 4, which is 4 by 5, which is 80%. 80% males in the family. Easy in the company, I think so. Clear guys? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Two numbers x and y are respectively 20% and 28% less than z. Okay, let z be 100. So x is 20% less, 80, right? And y is 28% less. This is 72. By what percentage is the number y less than number x? So y is less than x by 8 upon 80, which is 1 by 10, which is 10%. Clear? Yes, sir. I hope this is clear to all of you guys. है ना? So next,
Daily train is to be introduced between stations A and B, starting from each end at 6 a.m. and the journey is to be completed in 42 hours. देखिए A और B दो स्टेशन हैं. From each end एक ट्रेन यहाँ से चल पड़ी और एक ट्रेन यहाँ से चल पड़ी. Two trains, right? The journey is completed in 42 hours. And what is the number of trains needed in order to maintain the shuttle service? Shuttle service is everyday service. So दो ट्रेन्स चल पड़ी हैं. So after 24 hours, this is 42 hours journey. So definitely after 24 hours, next day, the first train has not reached B and the second train has not reached A. So they have not reached to their destination, which means second day again there would actually be new trains that have to be introduced, that is third and fourth towards each other again, so that now you realize after 24 hours what would happen is in 42 hours train 2 would reach A, train 1 would reach B, and these trains 3 and 4 would be in between, but now they can revert back because obviously 42 hours में 2 times 24 cover हो जाता है. Then also there is a 6 hour का buffer time, right? So definitely there would be 4 trains that are required to maintain the shuttle service, right? कितना easy, कितना आसान. और there are people those who have struggled with this question. I don't know why, but there are people who have struggled with this. Right. चलिए आगे देखते हैं. A piece of tin is in the form of a rectangle having length 12 and width 88, right? 12 by 8, 8 and 12. So its area is actually 8 into 12, which is 96 centimeter square. 96 centimeter square, isn't it? Then he says it is used to construct a closed cube. Closed cube. तो देखिए अगर इसको क्लोज क्यूब में डाला है तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल वुड बी इक्वल टू द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, एंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6a square which is equal to 96, which means a square is equal to 96 by 6, which is 16, which means a is equal to 4, right? So what is he saying? The side of the cube is 4 centimeter. The side of the cube is 4 centimeter. वेरी सिंपल लॉजिक, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, है ना? बड़े आराम से हो जाएगा, है ना गैस? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ही सेज in a question paper there are 5 questions to be attempted and answer to each question has 2 choices, true or false. It is given that no 2 candidates have given the answer to the 5 questions in an identical sequence. Then for this to happen, maximum candidate, देखिए अगर हर क्वेश्चन में there are 5 questions, first question has option of true and false, second has option of true and false, third has option of true and false, fourth true and false, and fifth true and false, right? These are the options. So first question can be answered in 2 ways, second in 2 ways, third in 2 ways, fourth in 2 ways, and fifth in 2 ways. So total number of ways this question paper can be answered is 2 to the power 5, that is 32 ways. And if no one has answered in the identical way, no 2 students have answered in identical way, which definitely means that maximum number of students that can attempt this paper is 32. Clear, guys? Again, I think this is a topic, this is a question from permutation and combination, and generally most of you actually hate permutation and combination as a topic. So I hope that this would give you a bit clearer picture, or please attend my permutation and combination lectures, right? So guys, now comes the reasoning part, right? So अगर आप देखोगे तो reasoning part was a good part over here, right? He says that a person climbs a hill in a straight path from point sorry on O on the ground in a direction of northeast, right? O से ये O है, यहाँ से northeast, after traveling the distance 5,
Then from point A, he moves to point B in the direction of northwest, right? In the direction of northwest. ठीक है जी. So northwest गया, northeast से northwest गया, right? How much? AB is 12. ये रहा 12. So ये था 5 और ये रहा 12. So then he says, now how far is the person away from the starting point? This distance is what he wants to know. And guys, northeast and northwest, they would be at right angle to each other. Again, a question on geometry. 5, 12, so this is 13. Please attend my geometry class on Pythagorean. This is a very easy question, right? बहुत आसान है, बहुत easily हो जाएगा. Let's see the next one. He says, with when 3 friends A and B and C met, it was found each of them wore an outer garment of different color. चलिए different color का था. In random order, the garments are jacket, sweater and tie. The colors are blue, white and black. And the surnames are Ribeiro, Kumar and Singh. So 3 लोग हैं A, B, C. चलिए let's see. चेक करते हैं इनका. चलिए, surnames are Ribeiro, Kumar and Singh. Further, neither B nor Ribeiro wore white sweater. So white sweater, right? So sweater is white and B nor Ribeiro. So B जो है वो white sweater नहीं पहनता है. चलिए great, right? चलिए C wore tie. So C के पास है tie, isn't it? C के पास है tie. और देखें, Singh's garment was not white. So जो Singh है वो B नहीं है. Singh is not B. चलिए ये भी true है ना? And Kumar does not, white वैसे भी sweater था तो Singh is not wearing white sweater, isn't it? And great, okay. And C wore a tie, right? So definitely guys, Kumar does not wear a jacket and Kumar cannot wear tie. So ये तो बड़ा ही आसान सी बात हो गई है, right? So चलिए देखते हैं, right? आगे देखते हैं. Ribeiro does not wear black color. देखिए, Ribeiro does not wear black color and white is sweater, वो white भी नहीं पहनता है, तो Ribeiro wears blue, right? ये तो अपना पक्का हो गया, Ribeiro wears blue, right? तो मैं लिख रहा हूँ Ribeiro wears blue, right? Each of the friend wore only one outer garment of only one color. So मेरे हिसाब से अगर आप इसको सेट करेंगे, है ना, तो मेरे को दिखता क्या है, blue, right? And C wore a blue and B was not Ribeiro. B Ribeiro नहीं है, ये तो आपको पता चल गया है, right? और कुमार does not wear a jacket, right? So B कुमार भी नहीं है, so B Ribeiro भी नहीं है, B कुमार भी नहीं है. B is Ribeiro, not Kumar. B is Singh, isn't it? And Kumar does not wear a jacket, right? Kumar does not wear a jacket. So Kumar wear jacket करता नहीं है और Ribeiro black color की है. So he says Ribeiro does not wear white sweater or Kumar does not wear a jacket. See each of the friends. So C wore a tie. So C is Ribeiro. And this is Kumar. A is बन गई बात, right? और neither B nor Ribeiro wears white sweater. So which means white sweater ये पहन रहे हैं. A is white sweater. और ये blue किसी ने दिया हुआ था, Ribeiro does not wear black color. और वो टाई पहनता है तो ब्लू टाई. और ये है आपका black, what was it? Black jacket. क्वेश्चन डन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. अब चेक कर लीजिए. व्हाट इज सी सरनेम? Ribeiro.
व्हाट इज सी सरनेम रिपेरियो। सेकंड क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ द टाई, कलर ऑफ द टाई इज ब्लू। थर्ड क्या है, हु वोर स्वेटर, हु वोर स्वेटर, ए वोर स्वेटर। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए राइट। बड़े आराम से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और पूरे पूरे मार्क्स, 3 मार्क्स पूरे मिल गए हैं आपको इसमें, है ना। सो आई थिंक दिस इज वन क्वेश्चन वी शुड नेवर मिस, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन वॉक्स 12 ड्यू नॉर्थ, यहाँ से शुरू किया, ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 12 नॉर्थ, देन 15 ड्यू ईस्ट, यहाँ से 15 ईस्ट गए ये, एंड देन आफ्टर दैट 19 ड्यू वेस्ट, तो 19 ड्यू मतलब वापस चले गए भाई, तो ये 4, एंड देन 15 ड्यू साउथ, ये रहा 15, राइट। सो हाउ फार इज इट फ्रॉम पॉइंट, अगेन दिस इज इजी, इजंट इट, ये 15 है। आई थिंक दे लव्ड पाइथागोरस सो मच, ये 4 है राइट, और ये टोटल 12 था, तो ये लेंथ 3 हो जाएगा। So what is the distance? Again, this is a Pythagoras theorem. 3, 4, 5. Answer is 5 kilometer. Answer is 5 kilometer. देखिए डायग्राम बनाना जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वंस यू मेक अ डायग्राम थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। तो ये तो चलेगा, बहुत इजी है। ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन। सो ही सेज अ क्यूब, मुझे लगता है 2018 में आया, 2017 में आया, देखिए 2016 में आया हुआ। क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, तो इसीलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी भी होता है ना। तो चेक करते हैं। बोलता है क्यूब हैज़ ऑल इट्स फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स इफ इट इज़ कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज such that the side of small cube is 1/4 of the big cube. Number of cube is only one side painted is. So I think हम लोग इतनी बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, वन साइड पेंटेड, है ना। तो वो बीच वाला रहसी, तो नंबर ऑफ यू नो, अगर तुम देखोगे इट इज ए क्यूब अपॉन ए बाय 4 का क्यूब, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितना हो जाएगा, 64। 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, तो 64 क्यूब हैं। और आपको भी पता है जो फेस वाला क्यूब है ना, ये वाले जो फेस हैं, दिस इज द क्यूब्स विद वन फेस पेंटेड, क्यूब विद वन फेस पेंटेड। तो एक फेस पे कितने होते हैं, 4, तो 6 फेसेस पे कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 4 विच इज 24। सो दिस इज योर आंसर, राइट। एक बार मार्क कर लीजिए, आसान है, बहुत बार कर चुके हैं, बार बार करने के बाद प्रैक्टिस भी हो चुकी है। और क्यूब कटिंग एज अ टॉपिक हमने क्लास में किया हुआ है, तो आई होप कि यू नो इट वोंट बी अ वेरी टफ एस्पेक्ट। क्लियर। देखिए सिस्टम SYSTEM is written as SYSMET. So all I get is ये चल रही है replacement, isn't it? But not sure, so is very smart. इसने दूसरा भी दिया है, इसने बोला एक और मैं आपको करके देता हूँ। तो ये देखिए NEARER is AENRER. So N का इधर रिप्लेसमेंट, A का इधर रिप्लेसमेंट, ये बीच में, अगेन दिस एंड बीच में, ये भी चल रहा है, ट्रू। सो देन ही सेइंग व्हाट इज फ्रैक्शन, FRACTION। सो F इधर चला जाएगा, C इधर चला जाएगा, A इधर, R इधर, CARF तो होना चाहिए, CARF। सो ये तो दोनों कैंसिल हो गया, राइट। उसके बाद NOIT, यस, योर आंसर इज डी, राइट। ये तो बहुत इजी था, है ना, ये तो आप कोई सकते थे, बहुत इजी हो सकता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
In a class of 60 students where the number of girls is twice the number of boys, number of girls is twice the number of boys. So boys plus girls. Sorry. Um, wait a minute, guys. Boys plus girls is how much? 60. So boys plus 2 boys is 60, which means boys equal to 20. So girls कितना हो गया? 40. चलेगा? चलेगा. So it is Kamal, a boy is ranked 17th from the top. Kamal, a boy is ranked 17th from the top. चलिए यार ऐसे ही कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ये रहा कमल. 17th from the top. There are 9 girls ahead of Kamal. So 9 लड़कियां हैं इसमें से. So these are the girls 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Right. So number of boys in rank after him. Right. Not before him, after him. So पहले तो number of boys जो हैं वो रहे 1 2 3 4 5 6 7 और 8. 8 बॉयज तो इसके साथ में अपना भी तो काउंट करेगा. और बॉयज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं 20. सो 12 बॉयज जो हैं वो रैंकिंग में है. सो द नंबर ऑफ बॉयज इन द रैंक आफ्टर हिम वुड बी 12. देयर आर 12 बॉयज आफ्टर हिम इन द रैंक. ओके, सो आई होप दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए जो है वो खाता है ग्रेप्स और पाइनएप्पल. चलिए ग्रेट. ग्रेप्स पाइनएप्पल्स ठीक है. चलिए गुड. बी ईट्स ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस. बी खाता है ग्रेप्स और साथ में खाता है ऑरेंजेस. सी ईट्स ऑरेंजेस पाइनएप्पल्स. सी जो है वो खाता है ऑरेंजेस पाइनएप्पल्स. राइट. सी एट ऑरेंजेस पाइनएप्पल एप्पल. तो एक और फ्रूट आ गया एप्पल. डी जो है वो खाता है ग्रेप्स एप्पल एंड पाइनएप्पल. चलिए ये भी हो गया. आफ्टर टेकिंग फ्रूट बी एंड सी फेल इल. सो बी और सी जो हैं वो बीमार हो गए हैं. बी और सी देखिए बीमार हो गए हैं. सो ही सेज इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट इट कैन बी सेड दैट द कॉज ऑफ द सिकनेस वाज. इनमें कॉमन जो फ्रूट है बी और सी में सिर्फ और सिर्फ ऑरेंजेस हैं. सो कॉज ऑफ सिकनेस इज ऑरेंजेस. कॉज ऑफ सिकनेस इज ऑरेंजेस. कितना आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन को करना आना चाहिए, मैनिपुलेट करना आना चाहिए, दिमाग लगा के करना आना चाहिए. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर गाइस. चलेगा. बहुत अच्छा, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. चलिए ये एक बड़ा ही अच्छा ग्रिड वाला क्वेश्चन है. आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन. बोलता है कि a person X was driving in a place where all the roads ran either north, south, ये और ईस्ट वेस्ट. ऐसा कुछ है ग्रिड में. रोड्स आर एट a distance of 1 kilometer from each other in parallel. ठीक है जी, हर चीज 1 किलोमीटर है. He started at intersection of 2 roads, right? Drove 3 kilometer north. ठीक है, ये लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो गया 3 किलोमीटर. 1 2 3. सो ये है A1. और लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, है ना. ये लीजिए, ये रहे 3 किलोमीटर. बी पे चला गया. He started at intersection of 2 roads, drove 3 kilometers north, 3 kilometers west. इधर से 3 किलोमीटर वेस्ट चले जाएंगे. 1 2 3 चलेगा. ऑलराइट. एंड देन 4 किलोमीटर साउथ. 4 किलोमीटर साउथ. 1 2 3 4. ये रहा 4 किलोमीटर साउथ. सो दिस इज C and this is D. Okay. What is the further route could bring him back to the starting point if the same route is not to be repeated. अगर same route नहीं repeat करना है so definitely ये रहा. The route would actually be 3 east and 1 north. 3 east 1 north. 3 kilometer east, 1 kilometer north. I hope this is clear. Not at all a tough proposition, guys.
कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, चलेगा, बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। We shall go either for a picnic or for a trekking. Which of the following, if true, would falsify this claim, right? Would true falsify this claim? So he says, which of the following, if true, would falsify the claim? मतलब falsify करना है, claim को गलत prove करना है. We go for picnic but not for trek. No. ईदर फॉर पिकनिक और गो ईदर फॉर पिकनिक, इससे फॉल्सिफाई थोड़े ना होगा यार। एक्टिविटीज सच एज पिकनिक एंड ट्रैकिंग आर इनकरेज बाय द हेल्थ अथॉरिटीज। ना कुछ दिया है हेल्थ अथॉरिटीज का, ना तुमने अपना ज्ञान बांटना है, ठीक है। जो नहीं दिया है उसके बारे में सोचना नहीं है। कुछ दिया हेल्थ अथॉरिटीज कहाँ से आ गया? वी गो फॉर ट्रैकिंग एंड नॉट फॉर पिकनिक। नो, नथिंग लाइक दैट। We do not go for either picnic or trekking. Yes, this would falsify this claim here. Come on. बचा ही एक था एक्चुअली, मतलब लड़ाई की बात ही नहीं है, बचा ही एक है, तो हम कुछ सोचेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। There are 50 faculty members comprising of 30 males and rest of females. No male faculty member knew music, but many of the female faculty members did know music, right? So the head of the institute invited 6 faculty to a tea party by the draw of lots. At the party it was discovered no member knew music. The conclusion is that the party comprises of male faculties only. क्यों भाई? माना कि किसी भी मेल को म्यूजिक पसंद नहीं है और कुछ बट सी लिसन बोला है, बट मैनी ऑफ द फीमेल फैकल्टीज मेंबर्स डिड। मैनी मीन्स कितना? 90%, 80%, अबव 50%। मैनी का कोई डेफिनेशन थोड़ा ना है, ठीक है कि नहीं? तो तुम कुछ नहीं बोल सकते हो कि चाहे वो 6 फीमेल भी होती तो कोई ज़रूरी नहीं था कि उनको म्यूजिक आता होता, ठीक है। सो वी आर नॉट एट ऑल श्योर। मेल्स हमें पता है, सी नंबर ऑफ मेल्स आर 20, मेल्स आर 30, फीमेल्स आर 20 एंड नन ऑफ देम लाइक्स म्यूजिक। सो मेल्स को तो म्यूजिक पसंद नहीं है, बट हमें फैकल्टी मेंबर्स को, फीमेल मेंबर को पसंद है। द पार्टी ओनली दोज फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हु कुड नॉट गिव रेंडरिंग इन द म्यूजिक। ये भी गलत है, वी डोंट। हम कैसे बोल सकते हैं, इजंट इट? बिकॉज देखो यार, द टी पार्टी बाय द ड्रॉ ऑफ लॉट्स है, मतलब ड्रॉ से निकाला है, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ मेल मेंबर्स ही होगा या फीमेल मेंबर्स ही होगा, नॉट पॉसिबल, राइट। द पार्टी कंप्राइजेस ऑफ बोथ फीमेल्स एंड मेल्स फैकल्टीज। ये भी मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसा भी हो सकता है कि सारे मेल ही हो, ऐसा भी हो सकता है सारे फीमेल्स ही हो, राइट। आप कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ नहीं बोल सकते। नथिंग कैन बी सेड, nothing can the party said about, nothing can be said in the party about the gender composition. This is the right option. Answer is D. बेफालतू सोचना नहीं है। समझे? बेहतर यही रहेगा कि हम फालतू ना सोचें, है ना। तो वो बहुत ही बेहतर तरीका है ना, क्वेश्चन आंसर्स को करने का। चलिए आगे करते हैं। A, B, C, D are seated around a table. Every chair is spaced equally to the adjacent chairs. ठीक है जी। क्या है? A, B, C, D, A, B, C, D, E। ये लीजिए 5 मैंने पोजीशंस बना ली हैं। सो ही से C is seated next to A। तो अगर अपन ये यहाँ बनाते हैं तो C यहाँ हो सकता है, या फिर ये भी है कि अगर A अपन यहाँ बनाते हैं तो C यहाँ हो सकता है। दोनों ही हो सकते हैं। A is seated next to C, है ना। A is seated 2 seats from D। A is seated 2 seats from D। तो ये हो सकता है D, या ये हो सकता है 2 seats from D, है ना। A seated 2 seats from D। देखिए 1 2 2 seats from D, राइट। 1 2 2 seats from D, हाँ दोनों पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन he says D is seated next to B। D जो है वो B से नेक्स्ट बैठा हुआ है। सो डेफिनेटली इस केस में B यहाँ पे है और इस केस में B यहाँ पे। D is seated next to B, और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। इन दैट केस डेफिनेटली यहाँ तो ये E है या ये E है ना। और कुछ हो सकता है? E is seated next to A, वो तो है ही है। D and C
are separated by 2 seats. So D and C are separated by 2 seats. So D or C, D and C are separated by 2 seats. ऐसा तो कुछ नहीं है. I think guys ये एक कंडीशन शायद D and C are separated by 2 seats. ये गलत है. D और C नहीं होगा. I think D and C and E होगा. ये C and E are separated by 2 seats. So दोनों केसेस में 2 seats का separation आ रहा है. Then select the correct answer using the given codes. Okay guys, listen. ये आपका conditions दी हैं. C is seated next to A seated 2 seats to D, and B is not seated next to A. चलिए, B is not seated next to A. ये दो conditions बनती हैं. उसके बाद ये करेक्ट आंसर ऑप्शंस में से बोल रहा है. वेरी सॉरी, ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर्स की बात कर रहा है. ऑलराइट, सो अब आप चेक कर लीजिए व्हाट एक्जेक्टली E is seated next to A. बोथ केसेस में E is seated next to A. योर आंसर इज दिस. and D is seated next to B. दोनों केसेस में D is seated next to B also. So answer is B, 1 and 2 both. Right guys? Clear? Yes sir. So आगे देखते हैं. चलिए, 5 हॉबी क्लब्स हैं कॉलेज में. फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग. एंड द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स आफ्टर एवरी 2 days. गार्डनिंग वाले 2 दिन बाद मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले 3 दिन बाद, और चेस वाले 4 दिन बाद, याचिंग वाले 5 days बाद, एंड फोटोग्राफी वाले 6 days बाद. ये इस तरह मिल रहे हैं. राइट, सो ही सेज how many times do all the 5 groups meet on the same day within 180 days? So guys, they would meet at LCM of 2, 5 and 6, 60 days. So they would meet every 60 days. They would meet every 60 days. So number of times कितना हो जाएगा? Number of times would be 180 by 60, 3 times in 180 days. So they would meet 3 times in 180 days. So ये आप नोट कर लीजिए. This is very easy, right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. He says there are 5 persons in the group P, Q, R, S, T. 5 लोग हैं P, Q, R, S, T एक ग्रुप में. चलिए ठीक है. The group has 1 doctor, 1 lawyer and 1 artist. एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक आर्टिस्ट है. ग्रेट, ये लीजिए. ऑलराइट, P and S are unmarried students. P and S are unmarried. Right? P and S are unmarried. और उसके बाद T is a married man to the one of the members. So T is a married guy. So this is T is married, and he is married to one of the members. इन्हीं members में से married है, which means T is either married to Q or to R, right? But Q is brother of P, right? Q is brother of P and is neither doctor. Q is neither doctor nor artist. So which means Q is a lawyer. Q is a lawyer, right? And right, and then he says Q is brother of P. Brother of P, which means Q is a male member. So male means I'm writing positive. And neither doctor nor artist, right? R is not a doctor, so R is not a doctor. ये भी आपका ट्रू हो गया, ठीक है कि नहीं? सो R डॉक्टर नहीं है, ये भी पता चल गया. P and S are unmarried, guys. P and S are unmarried. Does that also mean something? That is something we need to know, right? P and S are unmarried. Okay. फिर से the group has 1 doctor, 1 lawyer and 1 artist, right? So P and S are unmarried. Okay. And T is a married man to one of the members, ठीक है. And Q is brother of P, right?
and is neither doctor nor artist. R is not a doctor, right? So I just think that if the information given, R is not a doctor, who is the doctor? So R doctor है नहीं है, P and S are unmarried, and P and Q, they are brothers, right? So with that information, all I can get is that P भी इन तीनों का और ये तीनों नहीं है. That is all we can say in that case. You understand that, see, Q was a liar, so ये बन गया इस तरह, right? अब क्योंकि अनमैरिड है ना वो डॉक्टर, मीन्स और आर जो है वो आर्टिस्ट है, राइट? आर इज एन आर्टिस्ट, सो विच मीन्स दिस इज अ डॉक्टर. सो टी इज अ डॉक्टर and T is married to R, right? T is married to R, and now since T is a male, R is a female, so ये रहा female, ये positive male. All right, अब make sense. Who is doctor? T is doctor. T is doctor. Then is brother of P, right? So I think number of males and females इनको दिया होना चाहिए था. Let's see. He says again, who is an artist? I think question फिर से हो जाएगा. आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट R है, आर्टिस्ट R है. और उसके बाद who is spouse of R? R की स्पाउस कौन है? R का स्पाउस T है, right? So I think all three questions are answered. फिर देखते हैं who is lawyer? लॉयर कौन है? लीजिए, who is lawyer? Q is a lawyer, right? और लास्ट में he says who is definitely a man? P, who is definitely a man? So man में हमें Q का man का पता है, right? So Q is definitely a man. Q, yes, ऑप्शन में Q है, so he is definitely a man, right? ये देखिए, अब फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इस साल बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन आए थे, तो आप खुद चेक कर लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह किया जाता है, राइट? बोलता है 4 फ्रेंड्स A B C D नीड टू क्रॉस अ ब्रिज, अ मैक्सिमम 2 पर्सन्स कैन क्रॉस अ ब्रिज एट अ टाइम. It is night and they just have one lamp. They just have one lamp. Okay, a person that crosses the bridge must carry to find the way. A pair must walk together at the speed of the slower person. Lamp E. To cross the bridge, the time taken by A है 1 मिनट, B है 2 मिनट, C है 7 मिनट, D है 10 मिनट. What is the total minimum time required for all of you to cross the bridge? देखिए, पहले गए A और B, जाने का टाइम 2 मिनट और वापस आने का टाइम 1 मिनट, बिकॉज A का टाइम चलेगा वहां पे. फिर गए A और C. Why A? बिकॉज A का टाइम सबसे कम है, तो मैं A से ही चेक करूंगा कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है. A और C जाने का टाइम 7 मिनट और वापस आने का टाइम 1 मिनट. फिर A और D साथ साथ गए, सो फिर से 10 मिनट क्रॉस करने के लिए और वापस आने के लिए 1 मिनट. वापस क्यों आना है? डेफिनेटली उसने वापस आके लैंप रख के फिर वापस जाना है, विच इज़ 1 मोर मिनट. सो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 19 जमा 4, 23 मिनट्स मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड. ये बहुत मशहूर, दिस इज़ अ वेरी फेमस पजल एक्चुअली, फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत फेमस पजल में से लिया गया है. ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे देखते हैं. A and B are of same age, either A is equal to B or A is older than B. C and D are of same age or D is older than C, right? B is older than C. चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, B is older than C. So which of them is true? He says A is older than B.
which of the following conclusion can be drawn? No, A is equal to B और A is older than B. ठीक है, B and D are of same age. देखिए B और D का सेम एज हम नहीं बोल सकते हैं. अगेन A और B का रिलेशन दिया है, C और D का रिलेशन दिया हुआ है, एंड देन B और C का रिलेशन दिया हुआ है. B इज ग्रेटर देन C एंड D इज ग्रेटर देन C. तो उससे B और D का कोई रिलेशन नहीं आ जाएगा. सो D इज ओल्डर देन C. आई डोंट D is older than C. C again either they are equal, same age, or D is older. So ये भी नहीं हो सकता. So A is older than C. ये true है because A may be equal to B, but B is actually greater than C, which means A is older than C. तो ये वाला बिल्कुल ठीक है. It is perfectly alright. Kindly mark it. बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पुट ऑन किए जाते हैं गाइज. प्लीज हाँ, नेवर टेक इट इजी. Oh my God, this is again a very tough proposition, right? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है. चलिए करते हैं, पर not at all tough. चलिए देखते हैं. बनाना पड़ेगा the way I have done it, right? उस तरीके से अगर आप ये करते हो तो मैंने क्या किया था, देखिए ये है A, B, C, D, E और F. ये he says 6 boxes A, B, C, D, F are painted with 6 different colors. तो यहाँ पे सारे कलर्स बना लिए थे, 6 कलर्स, 1 2 3 4, राइट. तो ये 6 कलर्स बन गए थे. ठीक है, और ये 6 कलर्स के बाद एक और बना लिया हमने, 1 2 3 4 5. Wait a minute guys. ठीक है, अब ये रहे 6 कलर्स तुम्हारे, और 6 कलर्स के बाद what does it say? He says they are violet, indigo, blue, green, yellow and orange. चलिए ये रहे आपके 6 कलर्स. और उसके बाद हमने एक और चीज़ क्या बनाई है, ईच बॉक्स कंटेन अ बॉल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 6 गेम्स. ये रही गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, वॉलीबॉल. सो लेट्स सी क्रिकेट. सो यहाँ से चेंज आ रहा है, ये थे आपके कलर्स और ये रही गेम्स. गेम्स हैं आपकी क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल. ठीक है, सो इस तरह आपको दिए हुए हैं ये. और द गोल्फ बॉल इज इन द वॉयलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन डी. सो इधर से देखो यार, the golf box is in the violet and is not in D. All right, so golf in D and golf का, so D is not in violet, so ये भी खत्म हो गया. बढ़िया है, right? the golf ball is in the violet, तो violet कलर में है. golf ball जो है वो violet कलर में है and is not in the box D. so golf D में नहीं है, which means D का कलर भी violet नहीं है, right? box A which contains tennis ball is in orange color. box A contains tennis ball. लीजिए, box A contains tennis ball. the box A which contains tennis ball is in color, is orange in color, so A is orange. लीजिए, खत्म, डन. ठीक है, एंड इज एट द राइट एंड. सो इसकी लोकेशन भी हमें पता चल रही है. ए जो है ये राइट एंड पे है. सो 1 2 3 4 5 6, तो हमने ये साथ में पोजीशंस भी शुरू कर दी. ठीक है, सो the hockey ball is neither in box D nor in E. the hockey ball is neither in box D. the
हॉकी बॉल इज नीदर इन बॉक्स डी नॉर इन ई, तो हॉकी बॉक्स इन दोनों में नहीं है. बॉक्स सी इज हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन, सी इज प्रिंटेड ग्रीन. सो पहले तो सब कुछ कैंसिल कर दो. C is painted green and the box C is having cricket ball, so box C is having cricket ball, so C is having cricket ball. क्रॉस लगाना बहुत जरूरी है, देखो बहुत फायदा होगा बाद में, ठीक है. सो हॉकी बॉल इज इन नीदर ब्लू नॉर इन द बॉक्स पेंटेड येलो, सो हॉकी ब्लू और येलो में नहीं है. सो हॉकी बॉल जो है वो ब्लू में नहीं है और येलो में नहीं है. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. ब्लू में नहीं है हॉकी बॉल और येलो में नहीं है हॉकी बॉल, राइट. चलिए ये भी ट्रू है. ओके, बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट, सो फिफ्थ फ्रॉम द राइट, बॉक्स सी इज fifth from the right, so 1 2 3 4 5, so ये रहा C. Box C is fifth from the box C is fifth from the right and next to box B. So next to box B की अभी हम बात करेंगे, right, next to box B. चलिए ये भी बात करेंगे. The box B contains volleyball, so box B contains volleyball, so B is volleyball. So volleyball is nowhere else. चलिए ये भी क्लियर हो गया, राइट. बॉक्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल एंड द बॉक्स कंटेनिंग हॉकी बॉल इज बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग गोल्फ एंड वॉलीबॉल, राइट. सो गाइस यहाँ तक हमारी सारी क्लैरिटी है, तो हमने सारे येस और नो कर दिए हैं. सो वेयर डज वी नाउ डू सी, एक चीज़ तो है जो आप फिर से पढ़ते हैं, गोल्फ बॉल इज इन द वॉयलेट बॉक्स एंड इट इज़ नॉट इन बॉक्स डी. सो गोल्फ बॉल के लिए कितनी ऑप्शंस बची हैं ये आप चेक कर लीजिए, राइट. चेक करेंगे तो मुझे जो दिख रहा है सारे क्रॉसेस के बाद ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए डी और ये है राइट हेयर, ठीक है. तो ये और ये कैंसिल, दैट्स द ब्यूटी, ठीक है. अब आपको क्लैरिटी हो गई है कि अगर आप क्रॉस लगाने लग जाते हो तो डी जो है, बॉक्स डी में एक क्लैरिटी अपने को आ गई है, देयर इज फुटबॉल इन बॉक्स डी, ऑलराइट. अब बात करते हैं बाकी रिमेनिंग कंडीशंस की. सो अगर आप देखेंगे तो मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पे ई जो है वो ये रहा, राइट, एंड सी, बाकी ये कैंसर, और एफ जो है वो ये रहा. तो हमारी सारी की सारी ये सेटअप हो, और जी वॉयलेट था विच मीन्स ई इज वॉयलेट, सो ई इज वॉयलेट. सो बाकी सब कुछ कैंसिल कर दीजिए, ये लीजिए ई इज वॉयलेट, ठीक है. सो हमारे सारे बॉक्सेस में क्या बॉल्स हैं वो हमें पता चल गई हैं. सो ए में जो है तुम्हारे पास, ए में कौन सी बॉल है, ए में है टेनिस बॉल, राइट. और कौन सी बॉल है, सी में है क्रिकेट बॉल. तो अपने को ये पता चल गया है ना. और उसके बाद फिर से चेक करते हैं दोबारा सारी कंडीशंस को. सो द यू नो व्हाट एग्जैक्टली नाउ वी रिक्वायर, देखें एक मिनट. यस, ये क्या है, हॉकी बॉल ना ही ब्लू में है ना ही वॉयलेट में. आई वांट टू सी दैट द हॉकी बॉल इज नीदर इन बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर इन बॉक्स पेंटेड येलो. The hockey ball is neither in box painted blue nor in box painted yellow. So देखिए हॉकी बॉल है F में, ना वो ब्लू है ना वो येलो है, डन. विच मीन्स ये जो है F जो है ये इंडिगो है, डन, खत्म, राइट. अब हमारे सारी क्लैरिटी बन चुकी है, राइट. बाकी हमें सिर्फ और सिर्फ दो का नहीं पता है. सो आई थिंक वो कंडीशन हमें नहीं दी हुई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अब फिर से बॉल्स की ये कर ले, सी इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड नेक्स्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग नेक्स्ट टू बी, राइट, नेक्स्ट टू बी. तो अपने को सिर्फ और सिर्फ पोजिशनिंग का रह गया. एज एट एक्सट्रीम एंड द बॉक्स हॉकी बॉल इज, मुझे वो वाली कंडीशन चाहिए, द बॉक्स
The box containing hockey ball is between the box containing golf ball and the volleyball. The box containing, so that was important. Volleyball किसके पास है? बॉक्स सी ये रहा बी, यहाँ पे है वॉलीबॉल. The box containing the hockey ball is between the boxes containing the golf ball. So this is golf, volleyball. So which means the box containing hockey ball. So ये रही hockey ball. अब तो गाइस बहुत आसान है. जी किसके पास है ये चेक कर लीजिए. जी है ई के पास, ये रहा ई, राइट. एच किसके पास है? एच है एफ के पास, ये रहा एफ, राइट. और ये रहा इधर होगा डी, और डी के पास क्या है चेक कर लीजिए. डी के पास है, व्हाट इज डी हैविंग, राइट. डी के पास क्या है? डी के पास अपने को पता है एफ है. क्वेश्चन इज डन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द गोल्फ बॉल. गोल्फ बॉल किसके पास है यार? ई के पास. खत्म, डन. सो मुझे लगता है कि इस तरह करने से ना आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, और उसके बाद तो बहुत ही विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. बी एफ इज पेंटेड इंडिगो, और ये सारे क्वेश्चन आई थिंक दिस कैन बी डन गाइस. बहुत आसान हो जाएगा. उसके बाद चलिए वो डन हो चुका है. आई होप उसको अपने रीड कर लिया होगा एक बार. यूपीएससी ईपीएफओ रिक्रूटमेंट 2023 आ रहा है, तो 158 वैकेंसीज हैं. प्लीज़ ज्वाइन द कोर्स. So EPF course is starting at 1800 rupees only. Do not miss this chance. You can use my code RUPSC. मेरा कोड है RUPSE, राइट. इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. I hope you have enjoyed the process. You have enjoyed this PYQ. आप खुद चेक करें, ट्रांजिशन है 2021 से हम 2016 तक पहुंच गए. So you can also imagine they have really improved. 2016 से 21 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और मैं आशा भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल बी बैक विद my namaskar, my pranam, and Jai Hind to all of you.